Welcome to the Formula Foundation, Stokes Theorem. Let me first write the statement. Let F be a vector field for which P, Q and R are continuous and have continuous first order partial derivatives in a region containing a surface S. If C is the boundary of S traversed in the positive direction, then line integral over the closed curve C of a vector field F dot dr, where closed curve C is the boundary of the surface, right? And this line integral is equal to the surface integral of the curl of a vector field F dot ds, right? Let me try to understand this formula. Let's suppose z is equal to f of xy is a function of two variables and its graph is a surface over a region R. Means ये एक 3-dimensional coordinate system है, x axis, y axis and z axis, and here is the region R. And we have constructed a surface S over this region R. And this surface is a graph of function z is equal to f of x, y. Now, this is a simple closed curve. This is the simple closed curve in a counterclockwise direction, right? And let me denote it by C. And this simple closed curve forms the boundary of the surface S, right? Now, अगर इस कर्व C के हर एक पॉइंट से एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें इस तरह, तो रीजन R की बाउंड्री फॉर्म होगी. अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर इस कर्व C के हर एक पॉइंट से एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो इस रीजन R की बाउंड्री फॉर्म होगी इस तरह. रीजन R की बाउंड्री फॉर्म होगी इस तरह और इसकी डायरेक्शन भी काउंटर क्लॉकवाइज होगी, राइट? एंड लेट मी डिनोट दिस प्रोजेक्शन बाय सी एक्स वाई. नाउ line integral over the closed curve C of a vector field F is equal to surface integral of a curl of a vector field F dot n cap ds. मीन्स जो वेक्टर है ds उसको हम लिख सकते हैं ds is equal to n cap ds, where n cap denotes the direction of a vector ds and ds shows the magnitude of a vector ds, right? So इसको ds को हम इस तरह लिख सकते हैं. Now let me take the right hand side first. So surface integral of a curl f dot n cap ds. So you know curl is a vector quantity which is the cross product of del operator and vector field f, and mathematically curl of a vector field f at a point is defined as the line integral of a vector field f over the curve around this point divided by the magnitude of the region, that is ds. Means किसी वेक्टर फील्ड का किसी पॉइंट पर कर्ल इस तरह डिफाइन है कि उस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा रीजन लिया जाए और उस पर वेक्टर फील्ड को इस कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल इसका इवेल्यूएट किया जाए एंड आफ्टर दैट डिवाइड इट बाय द एरिया और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रीजन, राइट? एंड n cap, where n cap defines the direction of the curl and curl is the cross product of two vectors. So direction of the curl is perpendicular to both del operator and vector field, right? So it is the mathematical definition of a curl. Now curl f dot n cap ds, and it is equal to what is curl? So line integral over the closed curve C at a point of vector field f dot dr divided by ds n cap. यह कर्ल डॉट n cap ds.
So dot product of two unit vectors in the same direction is equal to 1. So curl of vector field f dot n cap ds is equal to line integral over a closed curve C of a vector field f dot dr, right? And it is the line integral of a vector field f at a point over the closed curve around that point, right? Now according to Stokes it involves surface integral, और ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल हैं. इट मीन्स दैट अगर हम यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल इवैल्यूएट करेंगे तो हमें यहाँ भी सरफेस इंटीग्रल इवैल्यूएट करना पड़ेगा. बट स्टोक्स सेज surface integral of this is equal to the line integral of a vector field f over the closed curve C, and where closed curve C is the boundary of the surface, right? It means that we have to prove surface integral of a line integral at a point over the curve around that point of a vector field f dot dr is equal to line integral of a curve C, which is the boundary of the surface S of a vector field f dot dr. मीन्स ये जो लाइन इंटीग्रल है ये एक पॉइंट पर जो कर्व है, पॉइंट के अराउंड जो कर्व है उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल है. और ये जो हमें लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करेंगे मीन्स अगर इस लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल इवैल्यूएट करेंगे तो वो इक्वल होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड एफ ओवर द क्लोज्ड कर्व सी विच इज़ द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, राइट? इसका मतलब ये है कि फंक्शन के हर एक पॉइंट पर लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करें फिर उनको सम अप करें. लेट्स सी इन द फिगर. नाउ इस सरफेस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इस तरह के हर एक पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा रीजन होगा, राइट? हर पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा रीजन होगा और उस पॉइंट पर वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल इस डायरेक्शन में होगा, राइट? इसी तरह जो दूसरा पॉइंट होगा उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा उस पर जो वेक्टर फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. मीन्स इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, राइट? तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस हैं तो ये लाइन इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से. इसी तरह अगर हम इसी रूल को पूरी सरफेस पर अप्लाई करें तो हर एक लाइन इंटीग्रल दूसरे लाइन इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पूरी सरफेस का लाइन इंटीग्रल इक्वल होगा 0 के. आई होप यू आर गेटिंग कि हर एक पॉइंट पर जो वेक्टर फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल लेंगे तो वो लाइन इंटीग्रल अगर इस पॉइंट का लाइन इंटीग्रल होगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी और इसी तरह दूसरे की जो डायरेक्शन है, अच्छा अगर अब यहाँ पर पॉइंट होगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी. तो ये लाइन इंटीग्रल इससे कैंसिल हो जाएगा. इसी तरह इस पॉइंट का जो लाइन इंटीग्रल होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी तो ये लाइन इंटीग्रल इससे कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरह पूरी सरफेस का लाइन इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी रहेगा वो है इस कर्व का इंटीग्रल, राइट? जो किसी भी लाइन इंटीग्रल से कैंसिल नहीं होगा. इट मीन्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड एफ at a point over the curve around that point is equal to the line integral of a vector field f over this curve C, right? So curl of f dot n cap ds at a point is equal to line integral over a closed curve with around the point of a vector field f dot dr. Now अगर both side surface integral evaluate करें, surface integral, so surface integral of a curl of f dot n cap ds is equal to, now surface integral of a line integral at a point over the curve around that point is equal to the line integral over the curve where curve C is the boundary of the surface S
of a vector field f dot dr. We have proved it, right? And it is the left hand side of the Stokes theorem, right? So it was a geometric proof of Stokes theorem. Now let's see the mathematical proof of this theorem. So mathematical proof, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट ये स्टोक्स थ्योरम के स्पेशल केस का प्रूफ है जिसमें सरफेस एस इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस रीजन आर. इट मीन्स दैट every point in a region R will determine a single point on the surface S. That is, we cannot consider the sphere here, right? Now this surface S is a function of two variables x and y, and this function z is equal to f of xy has continuous second order partial derivatives, and partial derivative of z with respect to x and then with respect to y is equal to partial derivative of z with respect to y and then with respect to x, right? So again we write the Stokes statement. Line integral over the closed curve C of a vector field f dot dr is equal to surface integral of a curl of a vector field f dot ds, right? Where f is a vector field. Now we start our proof with right hand side. So taking right hand side. Now curl of a vector field f is a cross product of del operator and vector field f. That is, curl of a vector field f is a cross product of del operator and vector field, and it is equal to I cap, j cap, k cap, and del operator means partial derivative of with respect to x, partial derivative with respect to y, and partial derivative with respect to z, and vector field f means p, q and r. P, q and r, and p, q and r all are functions of x, y and z, right? So evaluate this determinant with first row. So it becomes I cap and partial derivative of r with respect to y, partial of r with respect to y, minus partial of q with respect to z, partial of q with respect to z, minus j cap and partial of r with respect to x, partial of r with respect to x, minus partial of p with respect to z, partial of p with respect to z, plus k cap and partial of q with respect to x, partial of q with respect to x, minus and partial of p with respect to y, partial of p with respect to y. And in short, partial of r with respect to y can be written as ry and so on. So this vector can be written as curl of f is equal to I cap ry minus qz, qz minus j cap rx minus pz plus k cap qx minus py, right? So ये तो है कर्ल ऑफ f. नाउ व्हाट इज ds? सो ds एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, राइट? ds. और इस वेक्टर को मैथमेटिकल वे में डिफाइन करने के लिए हम एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे r, पोजीशन वेक्टर r of a surface S, right? Means r is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, and you know z is a function of x and y, so position vector r is equal to x I cap plus y j cap plus z of x y k cap, right? Now how we define vector ds with position vector r? सो अगर हम वेक्टर r को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये वेक्टर r s
आर एक्स, राइट। और अगर इसी पोजीशन वेक्टर आर को विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो उसकी डायरेक्शन ये होगी आर वाई, राइट। एंड वी नो वेक्टर डी एस पॉइंटिंग अपवर्ड टू द सरफेस। सो क्या कोई ऐसी टेक्निक है कि जो टेक्निक हम इन दो वेक्टर्स आर एक्स एंड आर वाई पर अप्लाई करें और हमें रिजल्ट में ऐसा वेक्टर मिले जो इन दोनों जो वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर हो? यस वी हैव, कि अगर हम इन दो वेक्टर्स आर एक्स और आर वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मीन्स इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा बाय राइट हैंड रूल वो रिजल्टिंग वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, और इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स दैट वो वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और वही डायरेक्शन इस वेक्टर डी एस की है। मीन्स जो डी एस वेक्टर है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, और अगर हम इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, राइट। It means that vector ds can be defined in terms of position vector r as ds is equal to cross product of rx and ry times dx dy, right? And dx dy is equal to dA. It is equal to dA. So vector ds is equal to cross product of rx and ry times dA, right? Now rx is equal to, means partial derivative of r with respect to x is equal to I plus 0j plus, and z is a function of x and y both. So with respect to x partially अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा z x of x y k cap, right? And ry is equal to 0i plus j cap plus zy of xy k cap, right? So cross product of rx and ry is equal to I cap, j cap and k cap, and rx का फर्स्ट कोफिशिएंट है 1 0 एंड zx, एंड ry का फर्स्ट कंपोनेंट है 0 1 and zy. Now evaluate this determinant. So I cap and minus zx minus j cap and zy plus k cap and 1. So rx into ry is equal to minus zx I cap minus zy j cap plus k cap, right? So ds is equal to cross product of rx and ry times dA. So cross product of rx and ry means minus zx I cap minus zy j cap plus k cap times dA, right? So surface integral of a curl of a vector field f dot ds is the dot product of this vector, means curl of a vector field f, and this vector. Now notice that this dot product involves dA, and dA is equal to dx dy. So now surface integral turned into the double integral over the domain, where domain is this region R, right? Domain of the function is this region R. So surface integral is equal to double integral over the region R, and here we write the product of two vectors, that is curl of f and ds. So ith component of this vector is multiplied by its ith component, and if we take out minus as common from here,
So minus into minus will become plus. So it becomes qz minus ry, qz minus ry zx, and now minus into minus is equal to plus rx minus pz, rx minus pz times zy, right, plus 1 times qx minus py, qx minus py, and whole expression multiplied by dA, right? So it was the right hand side, which is equal to the double integral of the region R. Now let me work for left hand side. So taking left hand side, line integral of a vector field f dot dr over the closed curve C. Now let me focus on this region R, which is in xy plane, and boundary of this region R is formed by the projection of this curve C, right? And we call this boundary as cxy. So let me write this curve cxy in the form of parametric equations. That is cxy, and x is equal to x of t and y is equal to y of t. Both are the functions of t, where a is less than or equal to t and t is less than or equal to b. t is a parameter, right? Now जो वेक्टर फील्ड f है वो सरफेस s के लिए है, means f is a 3-dimensional vector field. Now let me define the vector field for the region R, means vector field in 2 dimension, and we denote this vector field by v, and v is equal to m, which is a function of xy in the direction of I, plus n, which is also a function of xy in the direction of j. If we evaluate line integral of a vector field v over the curve cxy, then it will be line integral over the closed curve cxy of a vector field v dot dr, and here dr is equal to dx in the direction of I plus dy in the direction of j. So it is equal to, and what is v? M means dot product of these two vectors, vector v and vector dr, m dx plus n dy, right? Now region R के curve की parametric form में t was the parameter, which is bounded as a is less than or equal to t and t is less than or equal to b. It means that line integral over the closed curve cxy, m dx plus n dy can be written as line integral from a to b, and dx and dy can be written as dx is equal to dx over dt dot dt, and dy is equal to dy over dt dot dt. So it becomes m dx over dt times dt plus n dy over dt times dt, right? We will use it. Now let's see the parameterization of this curve C. So region R की बाउंड्री किस तरह फॉर्म हुई थी? इस कर्व C की xy प्लेन पर प्रोजेक्शन से. इट मीन्स दैट कर्व CXY पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट और उस पॉइंट से इस कर्व पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उसके फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट वही होंगे जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हम कर्व CXY के किसी पॉइंट से कर्व C पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से. मींस इस पॉइंट के जो फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से सेम होंगे, राइट? सो कर्व C can be written in its parametric form
by its position vector, that is parameterization of curve C, means boundary of the surface S, and position vector R is a function of t, and it can be written as x of t in the direction of I cap plus y of t in the direction of j plus z. Z is a function of x and y is also a function of t. So z of x of t and y of t in the direction of k, right, where a is less than or equal to t and t is less than or equal to b. Now again evaluate the line integral of a vector field f over this curve C. So f is equal to p of x y z I cap plus q of x y z j cap plus r of x y z k cap. It's a vector field. So line integral over the curve C of a vector field f dot dr is equal to, now dr can be written as dr is equal to dr over dt dot dt. So first we evaluate dr over dt, means dr over dt. Dr over dt is equal to dx over dt in the direction of I cap plus dy over dt in the direction of j plus, now it is a multivariable function. So remind the chain rule for a multivariable function. Chain rule: if z is equal to f of xy is a differentiable and x is equal to g of t and y is equal to h of t, means z is a function of two variables x and y and y are also a function of a third variable t, right, are differentiable functions of a single variable t, then ordinary derivative dz over dt, means dz over dt is equal to partial of z with respect to x टाइम्स dx over dt. ये पार्शियल डेरिवेटिव है और ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, राइट, प्लस पार्शियल ऑफ z with respect to y times dy over dt, right. So here is the same situation, that z is a function of x and y is again a function of another variable t. So इसका डेरिवेटिव होगा partial of z, इसका डेरिवेटिव with respect to t, partial of z with respect to x dx over dt plus partial of z with respect to y and dy over dt, right, in the direction of k, and it can be written as dr over dt. dr over dt is equal to dx over dt I cap plus dy over dt j cap प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं zx dx over dt plus zy dy over dt in the direction of k, right. Now line integral over the curve C of a vector field f dot dr is equal to line integral over the curve C of a vector field f dot, and dr can be written as dr over dt times dt. So line integral over the closed curve C is the dot product of a vector field f, means this vector f dot this vector dr over dt times dt, right. So it is equal to line integral, and ith component of this vector field f is multiplied by its ith component. So p dx over dt plus and q dy over dt over dt plus r times this expression, means zx dx over dt plus zy
dy over dt, right, and multiplied by dt, and p dx over dt plus q dy over dt plus r zx dx over dt plus r times zy dy over dt times dt, and line integral of, now take out dx over dt as common from these two terms, so p plus r zx times dx over dt plus and dy over dt as common, so q plus r times zy times dy over dt, right. सॉरी, ये इंटीग्रल होगा फ्रॉम ए टू बी, मीन्स जब हमने इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा तो इंटीग्रल होगा फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी means line integral over the closed curve C of a vector field f dot dr is equal to integral from a to b of a vector field f times dr over dt times dt, right. Now few minutes ago we have proved that line integral over the curve C of m dx plus n dy is equal to this expression, and this expression is same as this, means if m is equal to p plus r zx and dx over dt plus n is equal to q plus r zy dy over dt times dt. So ये है इक्वेशन A, let's suppose. So by A it is equal to line integral over the curve cxy of m dx plus n dy, means m p r dx r zx dx plus n dy, means here n is equal to q plus r zy dy, right. और ये थी लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स line integral over the closed curve C of a vector field f dot dr. Now here we can apply the Green's theorem. So let's first see the statement of Green's theorem. So Green's theorem says line integral over the closed curve C of p dx plus q dy is equal to double integral over the surface over the region R, partial of q with respect to x minus partial of p with respect to y times dA. So here if we apply Green's theorem, so p is equal to p plus r zx, तो ये p सेम हो जाएगा, इसलिए इसको p डैश से डिनोट करते हैं, p q डैश एंड p डैश, राइट. तो p डैश इज इक्वल टू p प्लस r zx एंड q डैश इज इक्वल टू q प्लस r zy, और राइट हैंड साइड में हमें इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स q को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे और p को विद रिस्पेक्ट टू y. सो d q डैश विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स पार्शियल ऑफ q डैश विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू partial of q plus r zy with respect to x, and it is equal to partial of q with respect to x plus partial of r zy with respect to x. Now consider partial of q with respect to x. अब यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, because we have to differentiate q with respect to x, and q is the function of x and y, x, y and z, and z is also a function of x and y. So पहले इसको जनरल वे में देखते हैं. So implicit function theorem. Suppose x, y and z are related by f of x, y and z is equal to 0, and let z is a function of x and y. So here is the same situation, that q is a function of x, y and z, and z is also a function of x and y, right. Thus in the language of chain rule, the old variables are x, y, z treated as being completely independent, right.
The new variables are just x and y because z is a function of x and y. Means q के जो वेरिएबल्स हैं x, y एंड z, वो उनको हम ओल्ड वेरिएबल कंसिडर करेंगे, और जो z के वेरिएबल्स हैं, z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, जो x और y z के वेरिएबल्स हैं उनको हम एज अ न्यू वेरिएबल कंसिडर करेंगे, राइट. एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड एज न्यू, write s is equal to x and t is equal to y when they are considered as new variables, right. Thus partial of f with respect to s is equal to partial of f with respect to x, partial of x with respect to s, plus partial of f with respect to y, partial of y with respect to x, plus partial of f with respect to z and partial of z with respect to x. Means situation ये है कि अगर q x y और z का फंक्शन है और z इज़ अगेन अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और q को जो तीन वेरिएबल्स हैं x, y और z, उनमें से एक वेरिएबल x के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसके लिए हम पहले उसको विद रिस्पेक्ट टू s डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेयर s इज इक्वल टू x. मीन्स फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल f को उसी में से एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने उस वेरिएबल को रीनेम किया बाय अनदर वेरिएबल, मीन्स x इज इक्वल टू s, और फिर जब उसको s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया बाय चेन रूल, नाउ dx ओवर ds क्या होगा, 1 के इक्वल होगा. y क्योंकि s इज इक्वल टू s, सो dx ओवर dx इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू t, सो dy बाय ds इज इक्वल टू 0, means partial derivative of y with respect to s is equal to 0. So we have df over ds is equal to df over dx, and dx over ds is equal to 1 plus, and it is equal to 0 because partial of y with respect to x is equal to 0, plus partial of f with respect to z times partial of z with respect to s, right, and s is equal to x. So partial of f with respect to x is equal to this expression, right. So it means that partial of q with respect to x is equal to partial of q, बल्कि इसको इस तरह लिख लेते हैं, partial of q plus r z y is equal to partial of q with respect to x क्या होगा, partial of q with respect to x means इसको हम लिख सकते हैं qx plus partial of q, here f is q, so partial of q with respect to z, partial of q with respect to z and partial of z with respect to x means zx, plus now it is a product of two functions r and zy, so we use product rule of derivative. So first partial of r with respect to x and partial of r with respect to x is the same as partial of q with respect to x, means r भी थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है x, y एंड z, सो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा आर एक्स प्लस आर जेड एक्स एंड जेड वाई सेम, प्लस नाउ डेरिवेटिव ऑफ जेड वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स is equal to zyx and r same, right. Now partial of p dash with respect to y is equal to partial of p dash is equal to p plus r zx over dy. सो ये भी बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह ये हमने डिफ्रेंशिएट किया है. इट इज़ इक्वल टू पार्शियल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y प्लस पार्शियल ऑफ r zx विद रिस्पेक्ट टू y. सो पार्शियल ऑफ p प्लस r zx with respect to y is equal to partial of p with respect to y, and p is a function of x, y and z and z is a function of x and y. So partial of p with respect to y is equal to py plus pz zy plus here product of two functions, so we use product rule of derivative, that is partial of r with respect to y
and partial of r with respect to y is equal to ry plus rz zy and zx same plus z zx with respect to y differentiate करेंगे and r same, right? Now we are able to apply Green's theorem here. So equation 1 and apply Green's theorem in 1. So it becomes line integral over the closed curve C of a vector field f dot dr is equal to, and after applying Green's theorem here, means here p dash dx plus q dash dy is equal to double integral over the region R and partial of q dash with respect to x minus partial of p with respect to y times dA. So it becomes double integral over the region R, partial of q dash, partial of q plus r zy minus partial of p dash, means this expression means partial of p plus r zx times dA, right? Now we write right hand side of these expressions. So line integral over the closed curve C of a vector field f dot dr is equal to double integral over the region R, and it is equal to qx plus qz zx प्लस, और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, आर एक्स जेड वाई प्लस आर जेड जेड एक्स जेड वाई प्लस जेड वाई एक्स आर, और सिंस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू जेड वाई एक्स, सो इसको हम जेड एक्स वाई भी लिख सकते हैं, जेड एक्स वाई आर, right? And minus right hand side of this expression, so it is py plus pz zy प्लस, और इसको एक्सपेंड करते हैं, आर वाई जेड एक्स प्लस आर जेड जेड वाई जेड एक्स प्लस आर एक्स वाई times r, right? And line integral over the closed curve C of a vector field f dot dr is equal to double integral over the region R of qx plus qz zx plus rx zy plus rz zx zy plus zxy times r minus py minus pz zy minus ry zx minus rz zy zx minus zxy times r times dA. Now plus rz zy zx minus rz zy zx cancel, and plus zxy r minus zxy r cancel, so it becomes line integral over the closed curve C of a vector field f dot dr is equal to double integral over the region R. Now take out zx as common from these two terms, so it becomes qz minus ry zx, right? And take out zy as common from these two terms,
So it becomes Rx minus Pz times Zy and plus Qx minus Py, right, times dA. And finally this expression is same as this expression, and this expression is equal to surface integral of a curl of f dot ds, and it is equal to line integral over the closed curve C, which is the boundary of f of a vector field f dot dr. Means this expression is equal to right hand side. Thus we are done. Hence proved. Hence proved. That's it.